Today we are going to learn Moodle. It is the acronym for Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Okay, what is this? Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. It is an e-learning tool. It is an e-learning tool. Now, tool is nothing but a kind of equipment. And for what purpose we are using that equipment or machinery? For learning. And which kind of learning? E-learning. E-learning means online learning. E refers here electronic. Okay, so instead of we considering here electronic, we will consider here online learning. So to conduct certain online classes, to improve students' performance, or even to give training to the employees, such kind of tools, equipments are used. So what is a Moodle? It is an e-learning tool. It is a free and open source learning management system. It is a LMS. LMS, what is the meaning of LMS? Learning Management System. Okay, and it is free of cost and open to all. So what is this? It is a free open source learning management system. Now, apart from Moodle, there are two learning management systems that we are using nowadays. First one is Google Classroom. Second one is Microsoft Teams. But Microsoft Teams, Google Classroom you can use, but obviously it is free of cost. Certain features you have to buy, or if suppose you are using it in the institution, there is another version that I think with some rupees it is there, but you can use Google Classroom. It is free of cost. So Google Classroom, Microsoft Teams, all are LMS learning management system, and Moodle is also a learning management system. Don't consider that Moodle, the types of Moodle are Google Classroom or Microsoft Teams. No, Moodle is different. Microsoft Teams as well as Google Classroom are different, but all these three are LMS, learning management system. So Moodle, the acronym for Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, is distributed under GNU General Public License. So there is a license under that. It is distributed to all. It is free and open to all. And it is developed on pedagogical principles. Now pedagogy, what is this pedagogy? It is the science related to teaching. Pedagogy क्या है? एक field है. In that field, certain principles of teaching, certain methods of teaching are taught to teachers. टीचर्स लोगों को कैसे पढ़ाना है, हाउ टू टीच, ये बताया जाता है ये पेडागॉगी में. ओके, सो इट इज डेवलप्ड ऑन पेडागॉगिकल प्रिंसिपल्स. मींस व्हाट? इट इज रिलेटेड टू टीचिंग. करेक्ट. So all the certain pedagogical principles are considered here to develop this LMS. And it is used for blended learning, distance education, flipped classroom, and other e-learning projects in schools, universities, workplaces, and other sectors. तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है? It is used for blended learning. So blend मतलब पता है, दो चीजों का मिक्सचर करके आप करते हो. So blended learning, some task will be given, or certain topic will be discussed in the class, and certain assignments will be given for the students online to complete it at home. So blended classroom. So both the students can do it from home as well as in the classroom. So learning is done in the both places, at home as well as in the school. And basically in blended classroom as well as in the flipped classroom. Flipped classroom is again a type of blended learning. या फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग का ही टाइप है. तो इसमें ही सेम होता है. Suppose a teacher can give certain material earlier and the students can learn it at home, and online it is available, and then the students will go to the school and then they will learn that again.
So here learning is made very easy and interaction is there. टीचर डज नॉट फोकस ऑन टीचिंग एवरीथिंग. टीचर का फ्लिप्ड क्लासरूम में, ब्लेंडेड लर्निंग में फोकस ये नहीं रहता कि एवरीथिंग द टीचर शुड टॉट. नो. So interaction is there. Teacher gives some material to the students and students learn it, understand some part of it, and they start interacting with the teacher. So it is a very interesting kind of learning types: flipped classroom, blended learning, distance education. Sometimes it is not possible for the people to enroll for regular courses, so they appear for distance education. E-learning projects in schools. There can be certain projects, e-learning projects, courses which will be conducted online. So those courses, projects in schools, universities, workplaces and other sectors. Workplaces में भी employees को ट्रेनिंग देने के लिए ये Moodle यूज किया जाता है. And if suppose you're using the management feature, customizable management features, you can create your own private website with online courses. So educators, trainers, what they can do, educators मतलब जो education देते हैं, teachers, educators, trainers, बहुत से लोग प्राइवेट कोचिंग भी चलाते हैं ना. सो एजुकेटर्स, ट्रेनर्स, व्हाट दे कैन डू, दे कैन डेवलप देयर ओन ऑनलाइन कोर्सेस, and for those online courses they can use this Moodle, and by using the management features of Moodle, they can create their own private website and they can put those online courses, and students can enroll for those courses and they can achieve their learning goals. Next is, who has developed Moodle? किसने develop किया Moodle? Moodle is developed by Martin Douglas. Who has developed this? Martin Douglas. And what was his intention to develop this? He wanted to help the educators. All the educators जो है उनको क्या करना है? Help करना है. And for their help, he has created this model so that these educators can develop online courses for the students. And what was the focus? What should be the focus when they will be developing the course? What should be the focus? The focus should be interaction. इंटरैक्ट करने के लिए ये कोर्सेज डेवलप किए, ना कि पढ़ाने के लिए खाली. So there should be interaction, and through interaction the learning should happen. So like that the course is developed so that interaction may happen. And even collaborative construction of content. So sometimes Moodle, you can invite other teachers to join that Moodle. So other teachers also can develop, they can contribute in the content. So even students can contribute in the content. So like that collaborative course content can be developed. Together, people can develop, teachers, educators can develop the content. Okay. And it is content of what? The course. Course में जो material पढ़ाना है वो content. And it is in continual evolution. Continual evolution means ये Moodle में every time it is there are certain changes. ये Moodle में क्या हो रहा है? Changes हो रहे हैं. Many changes are taking place in this Moodle. Understood this? Who has developed Moodle? Why it was developed? What is the focus of it? Okay, now when it was developed, the first version of Moodle was released on 20th August 2002. ये जो first version है Moodle का, कब develop किया, कब release किया? 20th August 2002. So here there can be many questions asked from this slide. एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं. So क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? Blank is an e-learning tool. So what is an e-learning tool? Moodle is an e-learning tool. Or the question can be, Blank is a free and open source learning management system. Second question. So what is a free and open source learning management system? It is Moodle. Okay. Now Moodle
इट इज ये जो एक्रोनिम दिया गया है, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, so one word can be missing there and again question can be asked. Next can be where the Moodle is used. Okay, then who has developed Moodle, when it was first released, first version of Moodle was released on, that can be asked. So you should prepare all these questions. Now Moodle project is led and coordinated by Moodle HQ. Now ये Moodle HQ क्या है? See, I will just explain that to you and then we will move ahead. Okay, wait a minute. See, as I have told you, Moodle was developed in 2002, but it is led by Moodle HQ. Led मतलब कौन lead कर रहा है, कौन coordinate कर रहा है. So Moodle HQ is an Australian company. ये क्या है? Moodle HQ क्या है? Australian company है. Okay. Wait a minute. See, ये Moodle HQ में different kinds of partners are there in this Australian company, and these partners they work together and they make this Moodle is available free of cost to other people. So Moodle HQ is an Australian company. Next is Moodle is a leading virtual learning environment. Virtual, which is conducted online, which virtual means which is not real, which is conducted online, and learning environment. Okay, and it can be used in many types of environments such as education, training, development, and in business settings. तो कहाँ पे ये Moodle यूज कर सकते हैं? Many types of environments. Environments means institutions and so on. So कहाँ पे यूज किया जाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए, देन बिजनेस में ये Moodle यूज किया जाता है. एंड इट इज अ सॉफ्टवेयर रिटन इन PHP. It is a software written in PHP. Okay, it's the language. PHP is a language and it is written, Moodle is written in PHP language. And it is a modular system based on plugins. ये मॉड्यूलर सिस्टम है और जिसमें बहुत से अलग से यूजफुल प्लगइन्स होते हैं, मतलब अलग से फीचर्स होते हैं. Plugins are nothing but different features which are available in the system. And it allows you to create, customize, control your learning environment using community source plug. जैसे मैंने अभी बोला ना plugin, तो ये अलग अलग plugs है, features है, वो यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं? You can create, customize and control your learning environment. Learning environment आप develop कर सकते हो. You can control it. You can customize it by using one plug. What is that plug? Community sourced plug. Okay, so different kinds of plugins are available and Moodle has been translated in over 100 languages. कितने languages में ये translate किया है Moodle? Over 100 languages. And certified Moodle partners, ये जो Moodle partners हैं, they provide other Moodle services including hosting, training, customization, content development,
तो अलग अलग ये सर्विसेज ये मूडल पार्टनर सबको प्रोवाइड करते हैं। ये होस्ट करना, ट्रेनिंग देना, कस्टमाइज करना, कंटेंट डेवलप करना, ये सभी चीजें, ये सर्विसेज ये मूडल सर्टिफाइड मूडल पार्टनर्स हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द फीचर्स? द फर्स्ट इज peer assessment. Peer means friends, same age or like-minded people, peer. So peer can assess you, your friend can assess you, so you all together can assess yourself. Peer assessment. Then personalized site name that allows you to use Moodle on mobile. तो पर्सनलाइज साइट, जैसे मैंने बोला ना कि आप वेबसाइट, खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं by using these Moodle management features. And once you develop it, you can use Moodle on your mobile too. Next feature is there are certain graphic themes that you can use so that you can change the look of the Moodle. अलग अलग themes, जैसे आप Gmail यूज करते हैं तो उसमें भी themes होते हैं. You can choose your theme and you can change the look of your account. So like that, different themes are available. You can use those themes and you can change the look of your Moodle. Then Moodle Moots. Now what is this Moodle Moot? Moodle Moot are nothing but the online conferences that you can conduct. क्या ये जो conferences organized by universities, organizations by using Moodle, even Moodle partners, associations or Moodle HQ for Moodle community members. Okay, so ये क्या है? Moodle Moots. आप कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइज करते हैं कॉन्फ्रेंसेस थ्रू यूजिंग दिस Moodle. And Moodle also has import features for use with other specific systems such as importing quizzes or entire courses from Blackboard or WebCT. Okay, तो आप अलग अलग चीजें इंपोर्ट कर सकते हो, ले सकते हो Moodle में, सच एज क्विजेस. बहुत से क्विजेस अवेलेबल होते हैं, तो वो ऑनलाइन क्विजेस भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, एक नया फीचर उसमें ऐड कर सकते हैं. इवन यू कैन इंपोर्ट एंटायर कोर्स, पूरा कोर्स आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, ये फ्रॉम ब्लैकबोर्ड और वेबसिटी, सभी इससे आप ये पूरा कोर्स वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं. ओके, and Moodle has adopted many different e-learning standards such as shareable object referred model, AICC/HACCP standards. It is even IMS content packages. It is not that much importance, that's why I have not written it. And Moodle is run on different kinds of operating systems. अलग अलग operating systems है ना, but it should support the PHP. ये PHP language उसमें supportive होनी चाहिए. Then only on these different kinds of operating systems such as Windows, Unix, Linux, FreeBSD, NetWare, OS X, ये जो operating systems है उसमें ये Moodle चल सकता है. The first, but only thing is it should have PHP support. Okay. Now, what are the advantages of this Moodle? See, Moodle gives access to course material anytime and away from campus. अगर आपको कोई कोर्स मटेरियल चाहिए तो कैंपस मतलब स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में या फिर कोई इंस्टीट्यूशन में जाके ही वो डेटा या फिर कोर्स मटेरियल कलेक्ट करना या फिर वहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं. It provides you at any time. Many types of multimedia can be embedded. अलग अलग तरह के वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, पिक्चर्स, ये मल्टीमीडिया आप इसमें एम्बेड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट कैन एक्सेस एंड रिस्पॉन्ड फ्रॉम एनी डिवाइस. को किसी भी डिवाइस से ये Moodle एक्सेस कर सकते हैं. ये अगर कोई इसमें
असाइनमेंट डाला है या फिर कोई क्वेश्चन पूछा है तो, या फिर कोई मैसेज है तो उसको वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी डिवाइस. लर्निंग मटेरियल्स आर यूजर जनरेटेड. नाउ हु जनरेट्स लर्निंग मटेरियल? ये जो लर्निंग मटेरियल है ये कौन जनरेट करता है? दोज हु आर द यूजर्स. ओके, सो लर्निंग मटेरियल्स इज जनरेटेड बाय द यूजर्स. जो मूडल जो यूज कर रहा है वो लर्निंग मटेरियल जनरेट करता है. say your say teacher can generate your learning material. Even you can help in generating the learning material. You are also users, teacher is also user, so collaboratively together learning materials can be generated. If something is accidentally deleted, it can be retrieved through the editing history. अगर आपको आपसे गलती से कोई भी चीज डिलीट हो गई है, you can retrieve it, you can get it back. Okay, थ्रू एडिटिंग हिस्ट्री. एडिटिंग हिस्ट्री में ये आपको कोई भी चीज डिलीट हो गई है तो वापस आप रिट्राइव कर सकते हैं. इमीडिएट एक्सेस टू इम्पोर्टेंट कोर्स इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल. कोर्स का जो मटेरियल है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको आप इमीडिएट एक्सेस मिलता है, जल्द से जल्द आपको वो मटेरियल मिल जाता है. Then there are certain additional learning tools such as forums and quizzes. Forums है, quizzes है, those additional learning tools are used while teaching when a person is using a Moodle. Okay, I hope you understood Moodle. Moodle समझ में आ गया आपको? बताइए मुझे, did you understand Moodle? It is a learning tool, e-learning tool. It is an e-learning tool, correct? Wait a minute, student, let me lock the class, or else every time at the end students join for the sake of attendance. It is an e-learning tool, LMS. It is generated under GNU General Public License, distributed under GNU General Public License. It is used for blended class learning, flipped classroom, distance education, e-learning projects. And by using customizable management features, you can create your private websites. It is developed by Martin Douglas, and the first version was released on 20th August 2002. Okay, and nowadays it is led by Moodle HQ. अर्लियर ये किसने डेवलप किया? मार्टिन डगमस ने. उसके बाद देयर आर 50 पार्टनर्स. 50 पार्टनर्स है ये Moodle HQ में. ये सभी ऑस्ट्रेलियन कंपनी के 50 पार्टनर्स है. सभी पार्टनर्स ने क्या इसके राइट्स परचेस किए, Moodle के राइट्स परचेस किए. और उसके बाद ये Moodle HQ ये कंपनी क्या कर रही है, ये अवेलेबल कर रही है, Moodle सभी को अवेलेबल कर देती है. ठीक है, it is written in PHP. Different kinds of plugins are available. It is translated over 100 languages, and you can use it on any OS operating system which has PHP. Okay, it should support PHP. It must have the inbuilt PHP in that. So different features are available: graphic themes, Moodle moods, import feature, personalized site, peer assessment. These are the features of it, and these are the advantages. Do you have any doubt about this Moodle? If you have, please ask. मनोज, आप बहुत टायर हो जाते हो, जल्दी टायर हो जाते हो. बाकी के बच्चे तो इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपका क्यों प्रॉब्लम है? क्यों इतना टायर होते हो आप? हाँ मनोज, why do you ask attendance link? Still there is time. What's your hurry? What's the hurry? Yes Manoj?
Now let us understand, let's get the introduction of blogs. What is this blog? Web blog. The shortened form of blog is, sorry, the shortened form of web blog is blog. Shortened मतलब छोटा किया हुआ फॉर्म. ये वेब ब्लॉग है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ब्लॉग. Now what is a blog? It is a website. Blog क्या है? एक वेबसाइट है which maintains an ongoing flow of information. क्या है ये? एक वेबसाइट है ना. ब्लॉग क्या है? एक वेबसाइट है. वो क्या करती है वेबसाइट? मेंटेन करती है. क्या मेंटेन करती है? ongoing flow of information. Ongoing flow मतलब, what's the meaning of ongoing flow? Continuous. Ongoing flow, continuous information is posted on that website. So that is the meaning of ongoing flow of information. Suppose I post some information today, again tomorrow I will post something, day after tomorrow I will post something. So ongoing flow of information, continuous information is posted on that website. It has links to other articles on other website. ये ब्लॉग पे आप लिंक भी डाल सकते हो ताकि दूसरे जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, those articles people can open and they can read, and usually presented as posts or a list of entries in reverse chronological order. तो ये ब्लॉग में क्या होता है? एक तो आर्टिकल के लिंक भी अवेलेबल करके देते हैं आप, बट सपोज इफ यू आर राइटिंग एवरी डे, अगर आप ब्लॉग मेंटेन करते हो, ब्लॉगर हो आप, देन ऑल दोस पोस्ट आर कॉल्ड एज एंट्रीज. आप जो भी पोस्ट डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंट्री. एंड ऑल दोस एंट्रीज आर गिवन इन अ लिस्ट. एक लिस्ट में सभी एंट्रीज आते हैं और वो एंट्रीज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहते हैं. रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है बताइए मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? सी, क्रोनोलॉजी में जब कोई भी चीज होती है तो वन आफ्टर अनदर, सपोज व्हाट हैज हैपेंड फर्स्ट इज गिवन फर्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट. सो अगर सपोज 10 o'clock को मैंने खाना खाया है, उसके बाद 12 बजे मैंने से फ्रूट्स खाए हैं, उसके बाद मैंने 4 बजे टी खाई है. सो अगर मैं क्रोनोलॉजिकली देती हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देती हूँ, तो पहले क्या आएगा? खाना खाया 10 बजे, 12 बजे फ्रूट्स खाए. ओके, विल जस्ट चेंज दिस. 10 बजे मैंने फ्रूट्स खाए, 12 बजे मैंने खाना खाया, 4 बजे मैंने टी लिया. ठीक है. सो ये एज पर द टाइम यू गिव क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जब पहले चीज क्या हो गई? मैंने फ्रूट्स खाए, फिर खाना, फिर चाय. तो ये टाइम के हिसाब से मैं जो फर्स्ट चीज हुई वो दे रही हूँ. दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके. रिवर्स क्रोनोलॉजिकल मतलब उल्टा. लास्ट जो हुआ है, अभी रिसेंट जो हुआ है, वो फर्स्ट देता है. फॉर एग्जाम्पल, जब अभी मैंने एग्जाम दिया ना, 10 बजे मैंने क्या खाया? फ्रूट्स. 12 बजे खाना, 4 बजे मैंने क्या लिया? टी. तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में पहले क्या आता है? जो लास्ट वाला, अभी लेटेस्ट में मैंने क्या किया? 4 बजे चाय पिए. उसके बाद मैंने क्या है? उसके पहले क्या किया है? खाना खाया. उसके पहले क्या किया था? फ्रूट्स खाए थे. करेक्ट. सो ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया जाता है. सो व्हाट इज द लेटेस्ट इज गिवन द फर्स्ट. अभी लेटेस्ट वाला फर्स्ट देते हैं एंड द ओल्ड एंट्रीज विल कम लेटर. अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया आपको? अंडरस्टूड व्हाट इज अ ब्लॉग? व्हाट इज अ ब्लॉग? टेल मी व्हाट इज अ ब्लॉग. आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ अटेंडेंस. आई विल शेयर इट. You have to join back again for the class. What is a blog? बताइए जल्दी. What is a blog? जल्दी जल्दी, लेक्चर खत्म होने वाला है. What is the meaning of blog?